Consumers equilibrium. Consumers equilibrium can be studied with the help of two types of analysis. The utility analysis and the indifference curve analysis. We will study both. First, we will study utility analysis. This analysis is based on economic thinking of a well-known economist, Marshall. And this was developed in the year 1891. Before we take up the conditions of equilibrium, when is a consumer in equilibrium, we must be familiar with certain concepts. The first concept is, who is a consumer? Consumer किसे कहते हैं? The meaning is a general one. One who takes decision about what to buy. What to buy means which goods and services to buy and in which quantity. A consumer need not necessarily be the income earner. In microeconomics, we normally take household, that is the family, as a unit, as a consumer. The reason is, whosoever may be earning in the household, घर में कोई भी कमाता हो, लेकिन क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, ये डिसीजन पूरे परिवार का मिलाकर होता है. इसलिए जो डिसीजन लेने वाला है वो परिवार होता है. जब आप ये टॉपिक पढ़ें तो दिमाग में रखिए कि एक व्यक्ति ये डिसीजन नहीं ले रहा है कि क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है. पूरा परिवार ये डिसीजन लेता है कि क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है. तो रिमेंबर, ऑल्दो वी मे call only a consumer, but consumer here means a household. This is one concept. Then we use another concept in economics, a rational consumer. Who is a rational consumer? If you go by the literal meaning of the word rational, we can say a person who takes appropriate decisions, right decisions, decisions in the interest of the family, decisions in his own interest. Now the question is, what is the interest of the consumer? A consumer is one who purchases goods and services. Now what is his interest in making this purchase? His interest is to obtain satisfaction. Another word for satisfaction is utility. Therefore, his interest is in maximizing utility from the given income he has, from the goods and services he is going to buy. Therefore, we call a consumer a rational consumer when that consumer attempts to maximize total satisfaction, total utility from spending his given income. You may say कि साहब ये तो सभी करते हैं, सभी नहीं करते. Sometimes a consumer may be doing odd things. He may not know what he is doing.
he may not be in a, you can say, appropriate mental state to take a decision. So the concept of rational has been introduced to exclude all such cases. All cases where consumer is not able to take a decision rationally. So whether we use the word rational or not, whenever we talk of a consumer in microeconomics, by this we mean a rational consumer, and a rational consumer is one which aims at, whose objective is to maximize satisfaction. This is another concept which you must keep in your mind while studying this topic. Then we come to another thing about this topic. What are the main aspects of consumers' behavior we are going to study? हम कंज्यूमर के बारे में क्या जानना चाहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम मेनली, देयर मे बी अदर एस्पेक्ट्स टू, दो बातें जानना चाहते हैं. वी वांट टू नो टू थिंग्स. वन, ऑन व्हाट बेसिस a consumer undertakes allocation of income between different goods and services. क्या सोचकर वो ये तय करता है मुझे ये चीज खरीदनी है, इतनी क्वांटिटी में खरीदनी है, कैसे खरीदनी है? That is one decision he takes. Now, what is the basis of taking this decision? We have just said a rational consumer is one who attempts to maximize satisfaction. So what is the basis of taking the decision? He will plan his purchases in such a manner that he thinks that he is maximizing satisfaction. Any other plan would give him less satisfaction than this plan. So this is one aspect. That is, how does he decide about what to buy and in what quantities? The basis is maximum satisfaction. And the technical term for this aspect is consumers' equilibrium. We will study the meaning of equilibrium just now, but I'm just telling you the technical aspect of allocation of income between goods and services, that is consumers' equilibrium. So we are going to study one aspect in technical terms. When is consumers' equilibrium achieved? कब ऐसी स्थिति, किन हालात में ऐसी स्थिति आ सकती है कि हम ये मान सकते हैं कि एक कंज्यूमर रैशनल डिसीजन ले रहा है, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए वो डिसीजन ले रहा है. Then another aspect. A consumer goes to the market. He has a price in mind. He has his given income. He goes to the market. He finds that price has changed. टमाटर महंगे हो गए हैं, प्याज महंगा हो गया है, ये चीज सस्ती हो गई है. What will he do? उसके दिमाग में एक प्लान था, ये खरीदना है, इतना खरीदना है. लेकिन मार्केट में जाके उसका प्लान बदलने लगता है. उस बदलने को हम बोलते हैं कि अगर बाजार में चेंज आ जाए, प्राइस में किसी कमोडिटी की कीमत में चेंज आ जाए, हाउ विल ए कंज्यूमर रिएक्ट? उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? उसके यानी कीमत कम होने पर, इफ प्राइस फॉल्स, what he is likely to do? To buy more,
to buy less or to buy the same quantity? There is no unique answer. But there is always a generalized answer. The generalized answer is what he or she is likely to do in most cases. ज्यादातर कंज्यूमर क्या करेंगे ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन हर कंज्यूमर एक तरीके से बिहेव करेगा, this we can't say. Every consumer is going to behave in the same manner. We just can't say. Now, just like for this aspect, we have given a technical name, consumers' behavior. For this aspect, there is another technical name, law of demand. Law of demand. This is another aspect now. Let me tell you something about the word law. This word is going to come again and again. Law of this, law of this, law of variable proportions, law of diminishing marginal utility, law of so and so. Remember, law means only generalized behavior. Generalized behavior. क्या मतलब है इसका? What is likely to happen in most cases? That is generalized behavior. We can give an example. You know this. When price falls, a consumer is likely to buy more. Remember, we have used the word likely. We have not said he will buy more. So when we say likely to buy more, what are we revealing? We are revealing that this may not always be the behavior, but in most cases, it is likely to be the behavior. So law doesn't mean that this will happen. इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा होगा. Law means generally this is likely to happen. So whenever this word law comes in economics, just keep in mind that this is not what will happen. This is what is likely to happen in most of the cases. There are exceptions. There are always exceptions, which we will take up later on. But for the time being, remember, law of demand, there may be law of supply, there may be law of equimarginal utility, there will be law of diminishing marginal utility, and so on. So the word law means generalized behavior. So when we say reaction of consumer to change in price, it only means generalized behavior of the. So now our study is actually divided about consumer into two parts. One, technical name, consumer's equilibrium. Second, technical name, law of demand. Naturally, when we say consumer's equilibrium, our next question then becomes, what is the meaning of consumer's equilibrium? Meaning only. We will not take the conditions. Now, before we take the meaning of consumer's equilibrium, we will take the meaning of equilibrium itself. Remember, equilibrium is a general term which is used in almost every field. Doctors often say, आपका equilibrium बिगड़ा हुआ है.
और कई साइंस में भी शायद ये शब्द बार बार इस्तेमाल होता होगा, इक्विलिब्रियम बिगड़ा हुआ है। स्टार, सन, मून, अर्थ, दे आर ऑल इन इक्विलिब्रियम। और जब ये इक्विलिब्रियम जरा सा भी बिगड़ता है, देन देयर आर प्रॉब्लम्स ऑन द अर्थ। सिमिलरली, तो when a person is in his best health, best state of mind, हम कहते हैं ये इक्विलिब्रियम में है, और उसको अपनी हेल्थ के बारे में अब कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी वो प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है, वो प्रैक्टिस उसके लिए ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का एक मीनिंग कहा जाता है स्टेट ऑफ रेस्ट। ना स्टेट ऑफ रेस्ट मीन्स अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने प्लान बना लिया, मेरा प्लान ठीक है। तो व्हेन इज ए कंज्यूमर इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, व्हेन इज ए प्रोड्यूसर इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, व्हेन इज ए पर्सन इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, तो समझ लीजिए कि वो इक्विलिब्रियम में आ गया है। This is one meaning. There is another meaning. Balance between opposite forces. Balance between opposite forces. Now, what are these opposite forces? हमारी बॉडी में बहुत सारी फोर्सेस एक साथ काम कर रही हैं। जब वो बैलेंस में होती है, हम कहते हैं इक्विलिब्रियम में आ गए। जब कोई फोर्स ज्यादा एक्टिव हो जाती है, दूसरी कम होती है और बैलेंस बिगड़ने लगता है, तो हम कहते हैं कि बीमार पड़ गए। लगभग वही मीनिंग यहां पर आता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप सबको मालूम है कि भाई किसी भी मार्केट में जो इक्विलिब्रियम होता है, वो कब होता है? ए मार्केट इक्विलिब्रियम इज व्हेन डिमांड फॉर द गुड इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ द गुड एट ए पर्टिकुलर प्राइस। जिस कीमत पर डिमांड और सप्लाई बराबर होंगे, हम उसको बोलते हैं कि मार्केट में इक्विलिब्रियम आ गया है। अब ध्यान करिए, तो ये डिमांड एंड सप्लाई अपोजिट फोर्सेस कैसे? How we say that these two forces are the opposite forces? You are a consumer. You will like to buy a commodity at as low a price as possible. आप कम से कम कीमत पर चीज खरीदना चाहेंगे। As a seller, अगर आप सेलर हैं, you will like to sell your commodity at the highest possible price. Therefore, the interests of the sellers and the buyers, suppliers and the demanders, they are opposite interests. One will like to have as high a price as possible. Other will like to pay as low a price as possible. कम से कम कीमत देना चाहेगा, दूसरा ज्यादा से ज्यादा कीमत वसूल करना चाहेगा। लेकिन मार्केट में फैसला कब होता है? परचेज कब होती है? परचेज जब होती है जब जो कीमत कंज्यूमर देना चाहता है, वही कीमत प्रोड्यूसर लेने को राजी है। So, the equilibrium in the market is when at that price at which what consumer wants to pay is also what producer is willing to accept. Otherwise, सौदा होगा ही नहीं, there will be no purchase. But we are at the present we are just talking about कि अपोजिट क्या है? तो अपोजिट इंटरेस्ट है।
जब उन दोनों में बैलेंस आ जाता है, बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, तब सौदा हो जाता है और उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ध्यान रखिए, इक्विलिब्रियम के दो जनरल मीनिंग होते हैं। अब एक आम भाषा में अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम को हम कैसे समझेंगे? मान लीजिए एक ऐसे आदमी को जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता, उसको समझाना चाहें, क्यों हो सकता है कि वो इन शब्दों पर ध्यान ना दे या उसकी समझ में ना आए, तो उसके लिए एक और शब्द बन सकता है बेस्ट। हमारी सारी जिंदगी चुनाव करने में निकल जाती है, ये करूं या ना करूं, बट व्हेन यू टेक अ डिसीजन, you think you have taken the best decision. So whenever the term equilibrium comes, just substitute it for the best decision. And you will understand कि भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कंज्यूमर ने अपने हिसाब से एक बेस्ट डिसीजन लिया है। तो इक्विलिब्रियम कैन आल्सो मीन ए बेस्ट सिचुएशन फॉर ए बी सी डी, किसी भी हालत के अंदर उसको हम बोलते हैं। अब आ जाइए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम।